Assalamu alaikum. From the platform of English Buffet.5, this is Zaira Batul here. Viewers, who's unfamiliar with William Shakespeare? I think there isn't anyone. He once said, brevity is the soul of wit, which means दानाई इख्तिसार में है, means कि दानाई मुख्तसर होने में है. जितने हम कम वर्ड्स इस्तेमाल करते हुए अपनी बात अपने रिसीवर तक पहुंचा सकें, उतना ही हमारा इम्पैक्ट अच्छा होता है टूवर्ड्स आवर लिसनर्स, राइट. सो दिस इज़ ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ प्रोवर्ब्स जिनको हम उर्दू में कहावत कहते हैं, राइट. दे आर द मैग्जिम्स. एंड समवन हैज सेड अ पिक्चर पेंट्स 1,000 वर्ड्स. आपके सामने एक पिक्चर है. आई होप कि यहाँ से आपको कुछ आइडिया हो जाएगा इस मैग्जिम का, इस प्रोवर्ब का. द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, विच मीन्स द फर्स्ट पर्सन टू अराइव हैज़ द बेस्ट चांस ऑफ सक्सेस. So if you will keep on making excuses and you are lazy, you won't be successful. So be the first one to catch the worm, right? Before moving ahead, viewers, you must know what is proverb actually. A proverb is a short, well-known, supposedly wise saying, right? Which usually is simple in language. Or proverbs contain truth, common sense, experience and wisdom, and they are indisputable. राइट व्यूअर्स, हमारे आबाव अजदाद, हमारे स्कॉलर्स, हमारे क्रिटिक्स जो कुछ भी वो कह गए हैं इन द फॉर्म ऑफ मैगजिम्स, कहावतें, they are acceptable all over the world and they are quoted, and definitely in their practical usage in conversational, you can say, practice, they hold a very good place and they leave a very good impression over the users and over the, you can say, your listeners. So once you start quoting them skillfully in your conversation, you will see the results कि आपको कितना अच्छा वो आपकी गुफ्तगू में कितना अच्छा impact आएगा with the help of these proverbs. Now let me explain the next one. If gold rusts, what then can iron do? और हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि if gold rusts, what shall iron do? इसका मतलब ये है व्यूअर्स के वो लोग जो कि कोई अच्छी पोजीशन, कोई बिग पोजीशन रखते हैं अपनी लाइफ में, अगर उनकी प्रैक्टिसेस ठीक नहीं हैं तो उनके सबॉर्डिनेट्स का फिर आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट. व्यूअर्स, यहाँ पे आपको एक टिप देती चलूँ कि वंस यू स्टार्ट यूजिंग proverbs in your day-to-day life, in your day-to-day situations, try to use them only in the situations instead of using them in sentences, right. इनको sentences में यूज़ करने से पहले सिर्फ आप situation फाइंड आउट करें और उस सिचुएशन के अंदर इसको थ्रो करें, राइट. तो इससे आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा होगा. जब आप इनको बार बार डिफरेंट सिचुएशंस में स्किलफुली और सही तरीके से सही मौके पे यूज़ करेंगे, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपके लिए मैं रेकमेंड करूँगी कि फिर आप इनको सेंटेंसेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं. सो वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ जस्ट टू यूज़ देम in the situations. No need to use them directly in the sentences, right. Next one is build castles in the air. इसको उर्दू में कहते हैं कि हवाई किले तामीर करना. मीन्स के इसको हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं कि if someone is just bragging about and he is having nothing to do with the practical aspect of anything, कि वो सिर्फ बातें ही कर रहा है, on practical grounds he has nothing to do, उसके पास कॉन्क्रीट फॉर्म में कोई एक्शन प्लान नहीं है, एंड ही इज़ जस्ट ब्रैगिंग एंड सेइंग. सो इन दैट सिचुएशन यू कैन से दैट ही इज़ बिल्डिंग कासल्स इन द एयर, राइट. एंड इफ़ यू वांट टू सी द सेंटेंस इन द बॉटम, दिस इज़ हाउ यू कैन ऑल्सो यूज़ इट, राइट. नेक्स्ट वन इज़ नंबर 4, बीट अराउंड द बुश. इसको व्यूअर्स आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि बीट अबाउट द बुश. इसको ट्रांसलेट आप ऐसे कर सकते हैं कि इधर उधर की हाँकते रहना और मुद्दे की बात पे ना आना, टू अवॉइड द मेन टॉपिक और आंसरिंग अ क्वेश्चन. सो हाउ कैन यू यूज़ इट इन अ सेंटेंस इफ़ यू वांट. लेट्स स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड डिस्कस द प्रॉब्लम. नंबर 5,
Once bitten, twice shy. It means a person who has been cheated once is likely to be cautious afterwards. कि एक दफ़ा अगर किसी का कोई बैड एक्सपीरियंस हो चुका है तो जब दूसरी दफ़ा उसको ऐसा करने को मिलेगा तो डेफिनेटली ही विल बी hesitant. So I can't trust her ever because I am once bitten, twice shy. So find out day to day situations and use these proverbs correctly. Number 6, a bird in the hand is worth two in the bush. इसका मतलब ये होगा what you have now is worth more than something you might get later. कि जो आपके पास है उसकी आपको कदर करनी चाहिए, ना कि आपकी अटेंशन उस तरफ हो कि ज़्यादा है और लेकिन वो ट्रबल से हासिल होगा. You should avoid that situation. And the sentence can be, don't quit your job while you build your business. A bird in the hand is worth two in the bush. Number 7, it is, borrowed garments never fit well. सो व्यूअर्स, इट डज नॉट ओनली मीन कि हम गारमेंट्स की ही बात करें. इट कैन बी कॉपीड बिहेवियर ऑलवेज क्रैम्प्स वन स्टाइल. कि अगर आप किसी के बिहेवियर को, किसी की किसी प्रैक्टिस को अगर आप कॉपी करेंगे तो इट विल नॉट सूट यू, इट विल नॉट फिट यू. जो आपकी अपनी पर्सनैलिटी है, जो आपका अपना टेम्परामेंट है, वो कहीं ना कहीं एक्सपोज होता रहेगा. सो यू कैन नॉट बोरो these things. These are natural and you yourself should reveal your own instead of copying, right? So in that situation you can use this proverb. Next one is a drop in the bucket, और इसको हम a drop in the ocean भी लिख सकते हैं viewers. इसका उर्दू ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगी कि ऊंट के मुंह में ज़ीरा, मतलब मिकदार में किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा कम होना. Right viewers? So the sentence can be, what we were paid for our work was a drop in the bucket or ocean compared to what the company earned. Right? Number 9, between the devil and the deep blue sea. जिसको कहते हैं ना कि आगे कुआं पीछे खाई, मतलब हर तरफ से प्रॉब्लम्स में घिरे होना और एंड देयर इज़ नो वे आउट. Trying to please both his boss and his wife puts him between the devil and the deep blue sea. I hope you understood. This is so easy. And the last one is, cast pearls before swine. Means offering something very much valuable to those who don't have their, you can say, who don't recognize its importance. ठीक है, कि किसी भैंस के आगे बीन बजाना, जैसे हम कहते हैं कि इसको उर्दू में व्यूअर्स ऐसे भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद. राइट? कि आप किसी ऐसे शख्स को कुछ वैल्यूएबल दे रहे हैं हु हैज़ नथिंग टू डू विद दैट, राइट, हु डजंट नो इट्स इम्पोर्टेंस. सो इन दैट सिचुएशन यू कैन यूज सच अ प्रोवर्ब. So keep on learning viewers, and you must know that you shouldn't stop learning because life never stops teaching. With this message I'm leaving you, and with saying that don't forget to subscribe my channel and liking my videos, as I'm going to bring more beneficial videos for you. So till the very next lesson, take care of yourself. Allah Hafiz.